is a missile designed to be launched from military aircraft and strike ground targets on land, at sea or both. ठीक है? हाँ जी मैम. The other classes I think faces some network issue, and we are trying to fix it. So we shall start, ma'am, or they are combining? We continue. Yeah, right. Thank you. Right, students? So we are studying about the missile की missiles क्या होती हैं, how they work, right? So we have the case study based question on that only. A military fighter plane is flying at an altitude of 600 meters with a speed of 200 km per hour. What he's saying, a military, see this is the ground level. Here this fighter plane is flying at a height of 600 meters, and the speed of this fighter plane, this speed of this fighter plane is 200 km per hour, means this plane is flying at a speed of 200 km per hour. The pilot spots enemy tanks at a point R on the ground. Let's say here is the enemy tank. And students, section C joined? Yes, sir. Yeah, can you hear me? We have started with the case study on the module 2. Please open your assignments. Fast, बच्चे जल्दी कीजिए. Sir, very good morning. Morning, good morning. तो बड़ी लेट कर दिया ज्वाइन करने में जी. Sir, actually, that was not there. When we opened the smart class, that is not there that time. What about other sections, sir? Are they joining? Sir, section A and B are combined. Right. Rest of the C is there, E is there, F left, I think, D and left. Yes, sir. I have just started. So I have started with the case study which we have begun yesterday, but we could not finish it. So I am taking this case study, बच्चों. A military fighter plane is flying at an altitude of 600 meters. So let's say at this point the military fighter plane is there, which is at a height of 600 meters. Okay, with the speed of 200 km per hour. The pilot spots enemy tank at a point R on the ground. That is, this point is R, and here is a enemy tank, right? After getting the permission from the command center to hit the target at R, pilot fires a missile, right? So from this point he is firing a missile which will hit the target at point R. Fighter plane was at point A at the time of, this is the point A at the time of fire of missile. Missile moves to the target at enemy tank station at R at an angle of 45 degree, means this angle is 45 degree, and the speed of this is 300 km per hour, right? The speed of the missile is 300 km per hour. What is the horizontal distance between fighter plane at A and tank R? So that this angle will also be 45 degree. Now what you have to find? What you have to find? AR. Can you find AR? Students, angle is given, altitude is given, height is given, perpendicular and angle is given. You have to find hypotenuse. So which concept you will apply here? Which trigonometric ratio? Sine 45. Let's say this point is B. It will be equal to AB upon, find कीजिए बच्चों AR. Please find out what is the length of AR. Please find out what is the length of AR. What is the value of sine 45?
हाँ जी बच्चों, क्या आई है एयर की वैल्यू? किसने फिनिश कर लिया? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज बताइए बेटा, प्लीज स्टैंड अप। स्टैंड सी से स्टूडेंट, हाँ जी। 600 into under root 2. Very good, beta. The value of tan 45 is 1 by root 2. Please sit down. And AB is 600. You cross multiply this. AR will be equal to 600 root 2 meters. This is the first answer. Now, what is the second question, students? How much time will missile take to hit the target at R? Now, you have to tell me how much time it will take. What is the speed of the missile? What is the speed, students? 300 kilometers. How much distance it has to cover? This is the distance, this is the speed. So we have the formula speed equal to distance upon time. Since we have to find time, it will be equal to distance upon speed. Please tell me what will be the time taken. Please tell me what will be the time taken. Distance is 600 under root 2 and the speed of the missile is 300 kilometer per hour. हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया? Anyone has completed this? बेटा ये सेक्शन 10E जो मुझे नजर आ रहा है, इसके अंदर ये सेकंड बेंच पे दो बॉयज बैठे हैं। प्लीज स्टैंड अप बोथ ऑफ यू। हाँ, जो पीछे देख रहा है अभी अभी आप ही खड़े हो जाओ बेटा, आप ही को बोल रहा हूँ मैं। यस, बोथ ऑफ यू। हाँ जी, माइक के पास आ जाइए बेटा। प्लीज स्विच ऑन द माइक। नेटवर्क ही चला गया है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, हैव यू डन द फर्स्ट पार्ट? हैव यू डन द फर्स्ट पार्ट? Yes. हाउ टू डू द सेकंड पार्ट बेटा? हाँ जी, I have written the formula also, I have given everything. Then why you are not doing? T equal to distance upon speed. हाँ, वो तो पता चल गया बेटा। T equal to distance. What is the distance? Sir, is 600 under root 2. And what is the speed? Sir, 2 under root 2. Speed. 250. Speed. Where you are lost बेटा? बोर्ड पे लिखी हुई है स्पीड। 300. अच्छा, बट यहाँ पे डिस्टेंस जो है दैट इज इन मीटर, स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट विल डू? What we will do now? 18. हाँ जी, क्या करेंगे? Multiply 5 upon 18. किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 5 upon 18. किसको करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई? 600. 600 को। हाँ जी, बैठ जाइए, आप दूसरे स्टूडेंट को दे दो माइक। हाँ जी बेटा, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 6 upon 18. 6/18 18. कहाँ से आया 6/18? बेटा इट इज 5/18 नॉट 6/18। ठीक है। सो टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड वी मल्टीप्लाइड बाय 5/18। बट करना किसको है? स्पीड को करना है, 300 किलोमीटर पर आवर। सो कन्वर्ट करके बताओ जरा कितनी आ रही है बेटा, प्लीज कन्वर्ट। ये है ना स्पीड इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड। Sir, 250 upon 3. 250/3 आ गई बच्चों। 6 3 are, so this comes out to be 250/3 meter per second।
Now tell me how much time it will take. अरे अपना करके बताओ, दूसरों को मत बोलो बताने के लिए बेटा. Where is your notebook? This is not your notebook. आप अपनी नोटबुक लेके आओ बेटा. I can see everything what you are doing. यस बच्चे जल्दी बताओ, इतना टाइम लगाऊंगा तो मैं एक ही क्वेश्चन होगा आज की क्लास में. आपको कैलकुलेशन इतनी देर क्यों लगा रहे हो? 600 मीटर डिस्टेंस है, स्पीड है बेटा 250 by 3, राइट? So 3 will go in the numerator upon 250. 0 से 0 cancelled, 5 से 5 is 12. So this comes out to be 36 by 5, which is 7.2 seconds लगेंगे बेटा. कितनी देर लगा रहे हो आप एक छोटा सा क्वेश्चन रूट करने आना है 600 में? हाँ जी, अच्छा 600 के साथ रूट भी है, सॉरी, डिस्टेंस में रूट मल्टीप्लाई कर दो. सो सिक्स हंड्रेड रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 250, राइट? 0 से 0 कैंसल, 5 12. So this comes out to be 36 root 2 by 5 seconds. ये आंसर आ जाएगा बच्चों. Sit down. Next question. Another enemy tank at point S on the ground moving with a speed of 90 km per hour in straight line away from the plane, right? Pilot fires another missile at an angle of 60 degree from its path, flight path position B at the instant when enemy's tank was at S. अभी देखो, पहले आपको डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे क्या वो बोल रहा है. ये फाइटर प्लेन है यहाँ पे. This is the point S. Now this tank is moving with a speed of 90 km per hour, right? Another enemy tank at point S on the ground moving with a speed of 90 km per hour in straight line away from the plane. Pilot fires another missile at an angle of 60 degree from its. ये बच्चे इसने 60 डिग्री के एंगल पे फायर किया, राइट? फ्रॉम इट्स फ्लाइट पाथ पोजीशन B at the instant when enemy's tank was at S and it hit this enemy tank at point. How much time is taken by the second missile to hit the enemy tank at point T? यहाँ पे ना बच्चे एक पॉइंट T की डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं दी है. Another enemy tank at point S on the ground moving with a speed of 90 km per hour in straight line away from the plane. The pilot fires another missile at an angle of 60 degree from its flight path position B at the instant when enemy's tank was at S and it hits the enemy tank at point T आना चाहिए यहाँ, right? How much time is taken by the second missile to hit the enemy tank at point T, right? Means ये भी मूव कर रहा है जी, तो ये यहाँ तक आएगा. Is this clear? Now what you have to tell, ये 60 की स्पीड पे जो है इसने हिट किया पॉइंट टी पे. मींस लेट्स से दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट टी है जहां पे हिट हुआ और ये पॉइंट एस है.
Is this clear, बच्चों? Now from here, this point, as tank is moving at a speed of 90 km per hour. This missile, इसकी speed दी है बच्चों? नहीं दी है जी. Right? So we assume the speed as same, that is 300 km per hour. So this missile is moving at a speed of 300 km per hour. But there is some data shortage here. Pilot fires another missile at an angle of 60 degrees from its path, position B, at the instant when enemy's tank was at S. Okay. Student, there is some data missing in this question because neither this speed is given, right? ना ही कुछ distance given है कि कितनी दूर जाके या कितने time के बाद. So we can't do this question correctly. और आगे दोनों क्वेश्चंस भी जो है इसी के साथ कनेक्टेड है. सो विल फॉर द टाइम बिंग विल लीव दीस टू क्वेश्चंस. राइट बच्चों? इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट जी? ओके, सो विल स्टार्ट विद द M3, दैट इज सब्जेक्टिव. द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevation of the sun. पहले तो मुझे बताइए, क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन क्लियर हुआ है आप लोगों को? ये वाला मॉड्यूल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों. हाँ जी, मॉड्यूल 3 क्वेश्चन नंबर 1. How many students have understood this question? Please raise your hands. जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है. सेक्शन ई में किसी को नहीं समझ आया? एक ही बच्चे को समझ आया है. और एनीवन एल्स? एक स्टूडेंट है 10C में, एक जो मुझे नजर आ रहा है 10E में. देयर इज नो वन एल्स. बेटा दो गर्ल्स बैठी हुई है सेक्शन 10E में, बिल्कुल लास्ट में सेंटर लाइन में. दोनों आ जाए प्लीज. बोथ ऑफ यू कम फास्ट. सेंटर लाइन में दो गर्ल स्टूडेंट्स, बोर्ड से चिपक के बैक वाले बोर्ड से जल्दी आ जाओ. कैन यू हियर मी? लास्ट स्टूडेंट्स, सेंटर लाइन, सेक्शन 10E, प्लीज कम. Yes, have you understood the question बेटा? हाँ जी बताइए जरा. यस हाँ जी बताएंगे कैसे डायग्राम बनेगा इसका? सर. आवाज नहीं आ रही बेटा अब आपकी. फर्स्ट वी विल मेक अ वर्टिकल लाइन. लाई जी बना दी जी, वर्टिकल लाइन बना दी. आगे? सर देन वी मेक अ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज बना दिया जी लोग. और कुछ? सर लेंथ इज गिवन. किसकी लेंथ गिवन है? सर 1/√3. लेंथ थोड़े गिवन है बेटा, तो रेशियो गिवन है. लेंथ कहाँ गिवन है? ये तो रेशियो है बच्चे. किसकी रेशियो गिवन है? अच्छा ये बता दो. अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम रख दूं ABC, किस किस की रेशियो है? सर AB की 1x हाँ जी. एंड AC की √3x. AC की? अच्छा ओके. हाँ जी, दूसरी स्टूडेंट को माइक दे दो. आप जाइए, यू कैन लीड. एक दूसरी स्टूडेंट को दे दो माइक. नहीं आपको ही बेटा, आपको नहीं जाना है. जो आप रुकिए अभी जरा. हाँ जी आप माइक लीजिए अभी जरा. हाँ जी बताइए. शी वाज राइट. यस. Yes. Why we are taking √3 for the hypotenuse? Very good morning, student of 10D. Right? You have joined late, so we have started with the assignment. Just open the module 3. In the assignment, question number 1 we have started. Question number 1 we have started. The ratio of the length of a vertical rod and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevation of the sun. Sun की जगह sun लिखिए बेटा. At that moment.
राइट बच्चों? तो आप कह रहे हो कि इस ये जो है ये 1x है और ये √3x है। Am I right? So yes. Why this is 1 √3 √3x? So because it is in a ratio. नहीं, रेशो किस किसकी है बेटा? So AB and AC. तो नहीं बच्चे नहीं, व्हाट यू आर, क्वेश्चन रीड कीजिए। द रेशो ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड इट्स शैडो। ये शैडो है या रॉड है? So ये shadow है। अच्छा, शैडो बेटा हमारी ग्राउंड पे होती है या हवा में लटक रही होती है? So आप, ऊपर। आपकी आपकी जो शैडो होती है, आप Yes. कहते हैं अगर शैडो बन रही है तो शैडो बेटा ग्राउंड पे बनती है या एयर में बनती है? So ऊपर से नीचे को बनती है। So ग्राउंड पे बनती है। ग्राउंड में बनती है, तो ये ग्राउंड पे है? So no. फिर आप ये क्यों बोल रहे हो? बेटा देखिए, जब हम खड़े हैं हमारे पीछे से लाइट आती है तभी शैडो बनती है ना, आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। So yes. अगर लाइट नहीं आएगी तो शैडो बनेगी? So no. नो। जब मेरी शैडो बनती है वो ग्राउंड पे बनती है या एयर में बनती है? ग्राउंड पे। तो आपने तो एयर में बना दिया है, फिजिक्स ही आपने रीइन्वेंट कर दी है। हाँ जी, बताओ मेरे को। बेटा ये अगर ग्राउंड पे बनती है तो ये शैडो ये बनी होगी पीसी। आप समझिए ना, देखिए यहाँ पे सन है, ये सन की रेज आ रही है जी, ये सन की रे आई यहाँ से, ये रे आई है। शैडो तो इस बॉडी की जो रॉड है वो ये नहीं होगी? देखिए, आप जहां पे खड़े हो, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी शैडो मेरे फुट के साथ आगे तक नहीं होती है? यस और नो? Yes. सपोज ये रॉड है, रॉड का फुट है ये, तो शैडो ये फुट के साथ होगी या एयर में होगी? खुद सोचो ना बेटा। देखो, जो चीजें हम डेली ऑब्जर्व करते हैं जब वो हमारी स्टडी में आ रही है तो हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? एम आई राइट? Yes. चलो प्लीज सिट डाउन। ठीक है, तो बच्चे अब ये नहीं है √3x, दिस इज √3x। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा, राइट? चलो आप जल्दी से मुझे फाइंड करके दिखाओ एंगल। 30 डिग्री आ गया? देखिए बच्चों, अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो गिवन है, राइट? परपेंडिकुलर और बेस की रेशो क्या होती है? tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया? x/√3x। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 कब होता है tan? 30 डिग्री पे, राइट? तो थीटा कितना आ गया बच्चों? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? So yes. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जी। हाँ जी, ए स्काई सेल्स इज दैट जेनर ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। अब देखो, सारी साइंस से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। स्काई सेल्स इज दैट जेनर ऑफ इंजीनियरिंग साइंस that uses extensive utilization of wind energy to move a vessel in the sea water। ठीक है जी। The sky sails technology allow the towing kite to gain a height of anything between 100 meters to 300 meters। मीन्स क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो एक अपना स्काई सेल्स टेक्नोलॉजी, टॉइंग काइट होता है बेटा, ठीक है? टॉइंग काइट को एक हाइट पे हम ऊपर डालने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और हाइट कितनी अटेन कर सकता है ये? 100 मीटर टू 300 मीटर। द सेलिंग काइट इज मेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी रेज टू इट्स प्रॉपर एलिवेशन एंड देन brought back with the help of telescopic mast that enables the kite to be raised properly and effectively। This is the story about the sky sails। Now we come to the questions। आपको डायग्राम गिवन है जी। तो डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे बेटा एक
ये काइट है स्काई सेल, राइट? ये काइट बना हुआ है जी, इज दिस क्लियर? और ये आपकी एक, दिस इज अ बोट इन द, राइट? Is this clear? Now, in the given figure, this angle is theta. This is A, this is B, this is C. Is it clear? Now what he says, in the given figure, if sine theta is equal to cos of 3 theta minus 30 degree, where theta and 3 theta minus 30 are acute angles, then find the value of theta. स्टूडेंट, जब हमने स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट, तो मैंने कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई थी जी। क्या बताई थी बेटा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos theta. कॉस थीटा। तो ये देखिए, यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, दोनों को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई कैन रिप्लेस दिस साइन थीटा बाय कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट? तो इसको यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूं। सो व्हाट आई गॉट, ये स्टेप क्लियर है बच्चों या नहीं है? इज दिस स्टेप क्लियर? cos of 90 minus theta is equal to cos 3 theta minus 30 degree. Is it clear? ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चे? यस, रेज हैंड, नो, आस्क योर डाउट्स। इफ यू हैव क्लियर्ड दिस, प्लीज अंडरस्टूड दिस थिंग, प्लीज रेज योर हैंड्स। डिस्कनेक्ट हो गया। अभी